Dear students, in this topic we shall discuss the mechanism of lung ventilation in mammals. The lung ventilation or breathing is a mechanical process. It consists of two phases, inspiration and expiration. During inspiration, fresh air moves in, while during expiration, the air with low oxygen and high carbon dioxide content is moved out of the lungs. Dear students, there are certain anatomical features which help the lungs to carry out ventilation or breathing. The first feature of the lungs is that they are spongy in nature. They neither pull nor push the air. Ventilation of lungs occurs due to their elastic expansion and contraction. Dear students, the second feature of the lungs that facilitates breathing is the presence of a muscular diaphragm at the floor of thoracic cavity. जो chest cavity है उसका जो floor है, that is formed of a strong muscular structure which is diaphragm. Diaphragm जो है जब ये relaxed हालत में होता है तो it is dome like, ज्यादा dome like होता है, जबकि जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स लेस डोम लाइक. डायफ्राम की इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है. द थर्ड एनाटॉमिकल फीचर फैसिलिटेटिंग ब्रीदिंग इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स. पसलियों के दरमियान में जो मसल्स हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं और ये दो तरह के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स. ये जो दोनों मसल्स हैं ये ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि दे कॉज द रिब केज टू एलिवेट और ड्रॉप. ये रिब केज को ऊपर और नीचे मूवमेंट देते हैं. एज ए रिजल्ट दे एक्सपेंड और रिड्यूस इट्स वॉल्यूम. As a result, pressure on the lungs is increased and decreased rhythmically. Dear students, now we shall discuss the mechanism of inspiration. Inspiration happens when the external intercostal muscles contract and cause the ribs to move forward and upward, elevating the rib cage. इसके साथ ही muscles of the diaphragm also contract, making it less dome-like. इन दोनों actions की वजह से combined effect जो होता है, that is the thoracic cavity expands. Chest जो है वो expand करती है. Chest expansion का effect ये होता है कि the pressure of air inside the lungs decreases. As a result, lungs expand. Air pressure in the lungs falls. ये जो fall है, that fall is below the atmospheric pressure. चूंकि lungs में air का pressure बाहर की air से कम हो जाता है, it creates a vacuum-like situation. So, the external air, which is at comparatively higher pressure than the pressure inside the lungs, so it rushes in from outside into the lungs, and that is inspiration happens. Dear students, now we shall discuss the mechanism of expiration. During expiration, the external intercostal muscles relax. के साथ internal intercostal muscles जो हैं वो इस वक्त contract करते हैं. As a result, ribs move downward and inward. साथ ही साथ
muscles of the diaphragm also relax, making it more dome-like. The combined effect of these two actions is that the volume of thoracic cavity is reduced. This causes increase in pressure on lungs. लंग्स में मौजूद एयर के ऊपर जब इस तरह से प्रेशर का इजाफा होता है तो एयर प्रेशर में इजाफा होता है. अब बाहर की जो एयर है उसमें प्रेशर अंदर वाली एयर की निस्बत कम होता है, लिहाजा एयर इज मूव्ड आउट पैसिवली एंड दैट इज हाउ एक्सपायरेशन हैपन्स.